Are you planning to become a data analyst? If yes, you should watch this particular video. Today we'll talk about how you can become a data analyst in the field of artificial intelligence era. So today we should talk about what exactly data analyst is or how you can become a data analyst in the field of artificial intelligence because बहुत सारे myth है within the industry. What to do, what not to do to become a data analyst. Multiple things you should talk about. Okay. Now another thing is that why you should listen to me, right? Let me introduce myself first. I am Uttam. I'm working as a lead data scientist at EY London. Within the artificial intelligence, data science, and machine learning field, I'm working past multiple years where I worked a lot all these technologies so I can guide you what you should do, what you should not to learn to get a job in data analytics. Now, what exactly the problem here we have the industry, what exactly people are facing the problem. I will let you know the problem first of all. The problem here is people don't know, उनको पता ही नहीं है what they should learn, है ना, what they should not learn. This is the gap, this is the problem. Okay, and I will let you know exactly what exactly things you should focus upon. Now the solution, I will let you know where you should focus more to get a job easily and fast. Fine. Now another question, I'm getting a lot of questions from the multiple students. Sir, will AI replace the job particularly or not of data analyst या किसी भी field की? I would say yes and no. Yes is those jobs for sure will be replaced जहाँ पे आप अपने आप को upgrade नहीं कर रहे हो. If you are not upgrading yourself, AI will take over a job. Take an example. आज के टाइम पे you can understand support, है ना? You can understand simply calling person, the person who is calling previously मैनुअल पर्सन कॉल करते थे, राइट सर विल यू गेट अ लोन और नॉट. राइट नाउ आपके पास दिन में 4 बार 6 बार 10 बार कॉल आता है बट वो एक ह्यूमन जनरेटेड नहीं होता है ना. दैट वाज समथिंग डूइंग ऑटोमेशन, एक एआई कॉल कर रहा है आपको ऑटोमेटिकली, राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एआई विल टेक ओवर अ जॉब जहां पे कोई मैनुअल एफर्ट या फिर ज्यादा एफर्ट नहीं हो रहे है ना, वो काम फॉर श्योर विल बी टेक ओवर. देन दिस इज समथिंग नो जो कोडिंग वाली जॉब्स है या फिर जो डेटा एनालिस्ट की या डेटा एनालिटिक्स फील्ड की अगर मैं बात करूं तो द थिंग विद रिस्पेक्ट टू एआई, जब हम चैट जीपीटी की बात करें, अगर एआई की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी नॉट रिप्लेस्ड बट हाँ एआई एंड चैट जीपीटी विल बी योर हेल्पिंग हैंड टू डू द जॉब फास्टर. जब से चैट जीपीटी आया है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी पीपल आर डूइंग द जॉब फास्टर. जो काम पहले करने में उनको 2 घंटे लगते थे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी दे कैन डू विद इन 5 मिनट्स, है ना. सो एआई इज अ हेल्पिंग हैंड. आई वुड से नो कि वो जॉब नहीं लेगा बट हाँ दैट इज अ हेल्पिंग हैंड फॉर यू टू डू द जॉब्स टास्क फास्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एवरीबडी, हर कंपनी को पता है एवरीबडी इज यूजिंग अ चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड डू द जॉब्स फास्टर. Now, another question, sir, do you really need a degree in India to get a job in data analytics? I would say in India, yes, you need a degree, but it's not mandatory कि आपको BTech ही चाहिए, BCA या MCA चाहिए. It's not required. But yes, you need a degree in India. Yes, you need a degree, but it is 80%. 80% हाँ आपको डिग्री चाहिए. But if you don't have a degree, 20% you don't need a degree. Why? Because अगर आप 20% की कैटेगरी में हो, यू शुड फोकस अपॉन योर पोर्टफोलियो, योर प्रोजेक्ट, व्हाट टू डू, वो दिखाई देना चाहिए सामने वाली कंपनी को. दैट मीन्स 80% इफ यू हैव अ डिग्री आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो. 20% वाले 20% चांसेस है कंपनी आपको ऑप्शन नहीं देगी आप इंटरव्यू में बैठे. क्यों? क्योंकि डिग्री नहीं है. बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है इफ यू आर कमिंग इन 20% ऑफ अ कैटेगरी कि आप जॉब नहीं ले सकते या फैंग कंपनी में नहीं जा सकते. इट्स नॉट अ रियलिटी. रियलिटी इज 20% कैटेगरी में हो, यू शुड विजिबल योर सेल्फ, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या प्रोजेक्ट हो, पोर्टफोलियो हो. जब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा आपके पास डिग्री नहीं है बट यू नो कि काम कैसे होता है, हाउ कंपनी विल हायर यू, राइट. सो यस 80-20% का रेशियो you should take care about. Second question, that so what salary you can expect when you become a data analyst in India specifically? The answer here, ये region wise depend करता है. If you talk about Delhi NCR या गुड़गांव area में, you can expect nearly 4 to 5 lakh. It's in nearby Delhi or Noida. But if it's in Gurgaon,
you can expect nearly 7 to 10 LPA. Okay, but again, it varies. If you talk about Bangalore or Hyderabad area somewhere, that would be around 10 to 13, in the range of 10 to 13 LPA a year. But that can be go higher also. It depends on you ki how much you have the zeal to get to crack the things. Okay, now sir, where to start and what to learn exactly, I will let you know. Okay, you can see the screen. Now, you should focus upon the first thing is that what you should learn. The first thing is Python. You can see that, right? Over here, the first thing in Python और R, इन दोनों में से कोई भी एक चीज होना या कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रांग होना, इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, देन we can talk about second thing is communication, right? Communication एक वो part है to become a data analyst or in analytics field, it is really important. Okay, when you talk about communication, ये एक बहुत important factor है to communicate with your clients, to communicate with your senior people and lot many stuff, right? And the third part is SQL. SQL पे आपको focus करना चाहिए because SQL is the part which help you to wrangle the data, to clean the data and so many stuff. फोर्थ पार्ट इज पावर बीआई या टैबलू. इन दोनों में से कोई भी एक टूल होगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट? देन इट इज नॉट मैंडेटरी कि पावर बीआई या टैबलू, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, बट दोनों में से कोई भी एक इज इंपॉर्टेंट. दोनों है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक इज इंपॉर्टेंट. टू क्रैक एन इंटरव्यू दोनों में से एक हो सफिशियंट है. फिफ्थ पार्ट इज मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एनएलपी. इन तीनों में से तीनों का आइडिया होना जरूरी है, लेकिन प्रोजेक्ट जो आप बनाओगे दैट यू शुड मेक अपॉन मशीन लर्निंग. दैट इज माई रिकमेंडेशन. गो फॉर मशीन लर्निंग. 3 से 4 मॉडल उठाने हैं टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दोज मॉडल्स. लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, 3-4 मॉडल उठाओ, उनको अच्छे से यूज करो, अच्छे से मॉडल बनाओ, अच्छे से समझो हाउ दे आर वर्किंग. उतना सफिशियंट है टू क्रैक एन इंटरव्यू. और एनएलपी और डीप लर्निंग का एक मीडिएट लेवल का आइडिया ले लेना है, हाउ दे वर्क, कैसे कैसे मॉडल्स होते हैं, कैसे काम करते हैं. बट प्रोजेक्ट वगैरह नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, ठीक है. एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, 6 पार्ट इज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मतलब अब फ्लो है ना, कि डेटा आ रहा है, बिजनेस रिक्वायरमेंट आई है, बिजनेस रिक्वायरमेंट के बाद डेटा कई बार आता है, कई बार नहीं मिलता, कई बार बनाना पड़ता है, राइट? देन हाउ द फ्लो विल वर्क. डेटा आया, व्हाट यू शुड डू फर्स्ट. क्या आपको एक्सेल में डेटा चाहिए, या आपको सीक्वल में डेटा आएगा डायरेक्टली, या डेटा क्लीन करना है, तो ये इट्स अ फ्लो है ना, दैट विल कम फ्रॉम बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. चाहे वो फाइनेंस का डेटा है, मान लो आप बैंक में काम करो, एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में यू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, है ना, वहां पे डेटा का फॉर्मेट अलग होगा. इफ यू स्टार्टेड वर्किंग इन Amazon, वहां पे डेटा का फॉर्मेट अलग होगा, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, पूरा का पूरा बिजनेस अलग होगा. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सेवेंथ पार्ट इज एक्सेल. एक्सेल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जहां पे आप डेटा को क्लीन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, राइट? इट इज रियली इंपॉर्टेंट. These are 7 things you should focus upon to get an interview cracked. Any interview I'm talking about, to become a data analyst in analytics field, right? So that is really important. And that's it for this particular video. Let's meet you next time then. Bye bye.